Hello everyone, hope you all are doing good. कैसे हैं सभी लोग? So today again we are here our guidance and that is Moonology guidance. So today we are going to have a Moonology guidance and in Moonology guidance I just need your names and your DOBs. So try to drop your name and your DOBs first to know about it. Hello everyone, hope you all are doing good. So just drop your names along with your DOBs. Okay, the first DOB which I got is of Ayush Chaurasia. Okay, let's see what guidance gives. Ayush Chaurasia, 18th October, 18 December 2000. Ayush Chaurasia, 18 December 2000. Ayush Chaurasia, 18 December 2000. Guidance for Ayush. Okay. Okay, so Ayush, it's a perfect time for you to get heal yourself. Try to heal yourself as much as you can. Try to give self time to yourself. Try to go for a short trip if you can go. Try to heal yourself. Then coming confidence is your key to success. Now the second universe wants to guide that you're losing the confidence sometime. That won't help you out. The universe is guiding you that stop losing the confidence, and if you will do that, the success is on your way. Okay. Next, just give me a minute. Second, guys, please drop it fast. Drop your DOBs jaldi jaldi. Hmm. Guys, please try to drop your DOBs as soon as you can so that we can have a good session. It's already 13:10, and if you guys are going to ask me so slowly, I won't be able to answer your questions in a so hurry form. I just got one DOB today. Okay, then Nidhi. Nidhi Sharma, 10th September 1997. Universe, please. Monology guidance for Nidhi Sharma, 10th September 1997. Okay, so angels are guiding you. You and your near ones are on safe. That means there is no issue you are going to have. Everything is going to be very better for you. Don't worry so much. You just need to be happy. Believe in the impossible. Believe in the things that you feel like that cannot be done. जो नहीं हो सकता आपको लगता है कि कैसे होगा क्या होगा तो उस चीज पे बिलीव करो कि नो यू विल बी एबल टू डू इट एंड जब आप इस चीज पे बिलीव करोगे ट्रस्ट मी आपको खुद दिखेगा दैट आप कैसे फटाफट से उस चीजों को कर पा रहे हो अपने लिए ठीक है ना आपके लिए कैसे वो चीजें होके आपको प्रॉपर रिजल्ट शो कर रही हैं ओके Okay, then I've got for Fabina Zabeen. Fabina Zabeen, 15 September 1980. Guidance for Fabina Zabeen, 15 September 1980. And it was please give guidance for Fabina Zabeen, 15 September 1980. Fabina Zabeen, 15 September. ओके योर कॉन्फिडेंस आप जो भी कर रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस लो कोई डिसीजन ले रहे हो उस पर भी कॉन्फिडेंस लो दे आर द की टू सक्सेस फबीना जी एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट थोड़ा सा टाइम लो अपने लिए शांत रहो आराम से रहना स्टार्ट करो हेलो प्रीत जी they are just guidance cards okay they're guidance okay Vishali Verma 28 September 1999 universe guidance for Vishali September 13 September okay the first part is the end of top cycle means the struggle the issues now you're going you were facing Vishali is going to be over
time the situations have been overwhelmed. Secondly, faith on your dreams, Vaishali. Hello, Neha. You have to faith on your dreams. You should have. And give time. Give time. Wait for the divine timing. Wait for the perfect timing so that your things may work. Very easy. Dugal ji, Radhe Radhe, Preeti Burma. Okay. Guidance for Preeti Bumrah and March 22. Guidance for Preeti Bumrah since March 1992. Guidance for Preeti Bumrah since March 1992. Guidance for Preeti Bumrah since March 1992. Okay, you need to handle the situation, Preeti, with very love. Try to handle that situation with very beautifully, peacefully, with love, and show the world what real you. ठीक है, ये नहीं कि आप show the world the real you. जो आप हो actually में try to show that. Do not try to cover yourself and come in front of the people. और जब आप ऐसा करोगे, you'll find the solutions to your problem, Preeti ji. Okay, then I've got I don't remember for Bia ji. Neha Nagwani, 19th March 1973. Neha Nagwani, 19th March 1923. So, new business, new romantic. Neha, something beautiful coming on your way. Like अगर आपके रिलेशनशिप में या पर्सनल लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहा था वो सॉल्व होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी सॉल्व वेरी सून, वेरी ब्यूटीफुली. Balance your spiritual life and your personal life. Try to be spiritual if you are not, and try to take a balance between those things. जस्ट लेट गो दोज पीपल, फबिया. फबिया, और बहुत ज्यादा अगर लोग डोमिनेट करते हैं ना, तो जो भी आपको डोमिनेट करता है उसका नाम एक ब्लैक पेन से लिख के, और जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, यूज एंड थ्रो वाले ग्लास में पानी भर के, वो उस नाम की स्लिप को रख के, एंड जस्ट फ्रीज इट इन अ फ्रीजर. ओके फबिया जी. देन इट्स डुगल, मुकुल डुगल, 9 फरवरी 2001. मुकुल डुगल, 9 फरवरी 2001. इधर से नहीं दिखेगा, कहाँ जाना है? हाँ, ये कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड मुकुल. के लिए गाइडेंस है कि जो वो बोलता है उसको वो करके दिखाना चाहिए, बिकॉज उसको वो करना ही उसके लिए बेहतर होगा. ठीक है, कमिटमेंट अगर देता है तो उस कमिटमेंट को पूरा करे. नहीं करता होगा तो प्रॉब्लम्स होंगी. ठीक है. सेकेंड इज बी होल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव. इसका मतलब ये होता है कि एकदम से ऊंचाइयों को छूने की चाह मत रखो. थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मुकुल को बोलो चलने के लिए. ठीक है. देन वी हैव भारती शर्मा. भारती शर्मा 15 जुलाई 1924. भारती शर्मा 15 जुलाई 1924. टेक टाइम फॉर योर सेल्फ. थोड़ा सा वेट करो, भारतीय सिचुएशन के हिसाब से हैंडल हो जाएगा. कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर कि आपका काम हो जाएगा. ठीक है. देन वी हैव गोपेश. गोपेश गुप्ता 27 मार्च 1994. 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 ओके. पहली गाइडेंस है कि यू आर इन योर कंफर्ट जोन. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा गोपेश. लोगों को प्रूफ करना होगा दैट यस यू कैन डू. चाहते हो कि चीजें आराम से हो जाए, आराम से नहीं होंगी. यू हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, और लोगों को शो करने का टाइम आ गया दैट यस यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट. बैठ के टाइम का वेट करने से आपका काम नहीं होगा. ओके. ट्राई टू बी अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट. मतलब कि जीतने की एक चाह रखो. मतलब कि आपको ये सोचना होगा कि बस मुझे जीतना है और मैं कैसे जीतूंगा. ठीक है. टाइम फॉर हीलिंग. अपने आप को भी थोड़ा सा टफ समय दो. जो चीज आपको अच्छी लगती है, जिसके साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो कर सकते हो, वो करने का टाइम आ गया है आपका. ओके. खुद से आंसर्स मिलेंगे गोपेश. इफ यू विल फाइंड आउट द मिसअंडरस्टैंडिंग इन योर रिलेशनशिप, यू विल फाइंड द आंसर्स. अगेन यू नीड टाइम फॉर हीलिंग. मतलब आप दोनों को खुद के लिए टाइम चाहिए. एनीबडी हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग, आप पूछ सकते हो.
I didn't got you channel. What you want to say? Is Will going to reply to my message? Will is the name of a girl or a boy? Let me know. Is a Will name of some person? Let me know. Is Will a name of a person? Okay, let me check. You guys have to talk to each other with understanding. Have to clear the issues, Charles. Channel wells. Okay. Anyone else who wants to ask, please ask your questions. Nimanshi. Okay. Yeah. Yes. If you guys are going to leave your ego's channel, then it's a yes. Otherwise, it's not a yes. Okay. Again. Nimanshi, bring love in your situations. Try to handle the situation with love, not with ego and fight. Okay. Still, you have to work more hard to make your things work in your favor because yet nothing after doing lots of hard work, but still you're not getting the result. Okay. Balance the spirituality and practically means balance your spiritual life and your practical life. You need to balance those life. Okay. Hello, ma'am. Good afternoon, Manaji. Because you have to come out from your comfort zone. Like आपको अपने ईगो पे बात लाना होगा कि कैसे नहीं होगा. अब आई हैव टू डू इट. बहुत हो गया. जो होना था वो हो गया है. अब जो चीज नहीं मेरे फेवर में है उसको मैं अपने फेवर में लाऊंगा. यू हैव टू बी इन सच अ एटीट्यूड गोपेश नाउ. एटीट्यूड लाना होगा थोड़ा अपने अंदर कि मैं कर लूंगा. हाय मानवी, कैसे हो? हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून मानवी, हाउ आर यू? गाइस, इफ यू ऑल लाइक माय रीडिंग देन प्लीज थोड़े से हार्ट्स हार्ट्स. हाँ, मैं समझ रही थी मानवी. थोड़े से जल्दी जल्दी हार्ट्स प्लीज. हार्ट्स, आई नीड टू सी हार्ट्स. रुकने नहीं चाहिए हार्ट्स. और 100 अगर आपको रीडिंग अच्छा लग रहा है तो आई हैव टू सी हाउ मेनी हार्ट्स विल आई गेट टुडे. हाउ इज योर स्टडी गोइंग मानवी? आई हैव टू सी हाउ मेनी हार्ट्स विल आई गेट टुडे. आई एम काउंटिंग एवरीबडीज हार्ट. कोई नहीं भेज रहा है, मतलब कोई भी किसी को भी मेरी रीडिंग अच्छी नहीं लगी, राइट? विवांशी, आई एम नॉट डूइंग एनी गाइडेंस. मैंने बोला ना कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा गोपेश. यू हैव टू प्रूव पीपल कि अगर आप चाहोगे तो आप अपनी चीजों को अपने हिसाब से करोगे. आपको अब एटीट्यूड लाना होगा. बहुत डरना और बैठ के सिर्फ सोचने से काम नहीं बनने वाला. ओके मानवी, मानी अपना ड्यू भी देना. Okay. The energy is gaining momentum and behold and make the first move. So Manvi, be prepared for your placement. आपके फेवर में चीजें होंगी. You will be very much satisfied. ठीक है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर. You have to be like very positive, very patient enough कि चीजें आपके फेवर में हो. Nothing will come of this situation. ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से नहीं होगा. Just have faith and trust on universe, Manvi.
Nimanshi ji, I am just giving Moonology guidance. It's a guidance deck, not the answers deck. Guys, please try to maintain that decorum. If I come with the guidance, please try to ask only guidance. It's very hard to handle two things on a one go. Okay? Hi, Ishika. Manvi, I'm not doing this today. Questions I'm not taking. Anyone else who needs to want to ask or get any question, please ask first. You're welcome, Manvi. Guys, I want to see some hearts and hundreds. जितने हाथ उड़ा सकते हो फटाफट से हाथ उड़ाओ. I'm not taking question. I'm giving guidance, Ishika. Guidance for your mother, Manvi. What is your mother's name, Manvi? Okay. Name, Manvi. Okay. Tell her to surrender to the divine. Divine भगवान को ऊपर surrender कर जाए. उनकी हर चीज अपने आप पूरी होगी और थोड़ा सा अपने आप को और प्रूव करे because she has lots of calibers in her life. उनकी सक्सेस रुक रही है अभी थोड़ी. तो उनको बोलो कि थोड़ा सा बाहर निकले अपने करियर को और ऊंचाइयां दें. ओके इशिका. Ishika, please wait. Your hard work is going to pay you out. मतलब कि आप जो भी situation में हो, you'll get the result. Okay. Secondly, it's type of thoughts है, negative emotions है, जो भी negativity आपने create कर रखी है, उसको release करो. चलो, bye bye everyone. Take care. Have a very good day ahead.